ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति सप्तम अभ्यास number 7. In the first 6 abhyasas we have seen lat lakara present tense in the first 5. In the 6th one we saw lot lakara, that of agnya. So quick recap. In lot lakara, for example, bhavan gacchatu is lot lakara, or saha gacchatu, this is also lot lakara. Tvam gaccha, lot lakara. Lot lakara is for agnya, instruction or request for other people or for self. So we saw examples like saha bhavatu, bhavan gacchatu, bhavaneva pathatu, bhavan vadatu. All this is lot lakara. Adya, today, aaj. We see lang lakara. Lang lakara is past tense. So lat lakara present tense, lot lakara agnya, ya request, etc. Lang lakara past tense. In this week we will also see the next 2 lakaras also, vidhiling, which is also like agnya, and lrit. Lrit is future, bhavishya. We will see all this today. Today will be, as usual, little theory only. Tomorrow more practice. In Abhyasa 7, page number 14. Different sanya shabdas are used. Kanya, ladki, aja, bakri, vasudha, sudha, bharya, agnya, nisha, jata, kshama, mala, ganga, yamuna, shila, praja, lajja. All these are strilinga shabdas, female, feminine. All sanya shabdas in Abhyasa 7 are strilinga. In Abhyasa 6 we saw napumsakalinga shabdas, dhanam, phalam, patram, vanam. So the whole book will go like this. If we have finished up to Abhyasa 9, we can begin Sandhi Prakarana, which is highly useful for Vedanta. When we read Bhashya and Tika, etc., Sandhi Prakarana is the most useful. After finishing these Abhyasas until Abhyasa 9, all 5 lakaras in this book, we can begin that later, next week or the week after. So if we have all this properly in mind, it is better. It will help later. So today, Adya, Strilinga Shabdani Santi. Sanya Shabdani, Strilinga Shabdani Santi. After that, Kha. Kha Shabdas are Dhatu. So Dhatu, they have given Chur. Chur, Churana. Chint, Sochna. Kath, Kehna. Bhaksh, Khana. Khana is also Khad. Khad is also Kana. Or Rach, Banana. So, Pancho, they all 5 will follow a different format than usual. So khad will be khadati, right? Khad, khadati,
क्रीड क्रीडति, पठ पठति. But here churadi gana, there is a new gana. Here chur will become chorayati, chint chintayati, kat khatayati, bhaksh bhakshayati, rach rachayati. All five will have I, vikarana pratyaya. This is called vikarana pratyaya. So they will all have I after the word. Chur will become chorayati. So when we are reading the Sanskrit books, if we see chintayati, you have to say chint dhatu, or kathayati will be khat dhatu, not kathay dhatu. Vyakaran 14th, page number 14, चतुर्दश. रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो. So this is in page number 67. Page number 67 in Sanskrit 67. सप्तषष्टिः पृष्ठ क्रमांकः सप्तषष्टिः. रमा शब्द, रमा रमे रमाः. I will only say today, tomorrow we will have to practice together. रमा शब्द, रमा रमे रमाः, रमां रमे रमाः. प्रथमा द्वितीया तृतीया रमया रमाभ्यां रमाभिः. चतुर्थी रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः. पंचमी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः. षष्ठी रमायाः रमयोः रमाणां. सप्तमी रमायां रमयोः रमासु. संबोधन हे रमे हे रमे हे रमाः. So Rama Shabda we have already seen Pullinga. Griham Shabda we have seen Napumsakalinga. Here Rama Shabda Strilinga is given. All three, if we are able to remember, it is good. Rama Shabda, for example, the way we remember is Panchami Vibhakti Ekavachana will be Ramayaha. Tritiya Vibhakti Bahuvachana will be Ramabhihi. So wherever this Vachana and Vibhakti comes, the word has to be remembered finally. This will help Vedanta study. Even in 2 months or so, if we are reading Vedanta, this will immediately help. संक्षिप्त रूप लगाकर, बैक टू पेज पृष्ठ क्रमांक चतुर्दश. संक्षिप्त रूप लगाकर कन्या आदि के रूप बनाओ. सो रमा कन्या, कन्या कन्या, रमा रमाई रमा. पेज नंबर 67 and kanya will also be behind that. Okay, kanya is not there. संक्षिप्त रूप लगाकर. So संक्षिप्त रूप आ ए आ आम ए आहा. So kanya will be kanya kanye kanyaha, kanyam kanye kanyaha. So this, if you are able to see before tomorrow, you have to just go through Rama Shabda before the practice tomorrow. इन शब्दों में लगेगा रमा, भार्या, क्षमा, everything will be the same. So नियम 10 we have already seen earlier. It is on page number दशम पृष्ठ क्रमांक. ईर और ईश के बाद इनको ण हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल here they have not Rama Shabda will become Ramanam, not Ramanam. Ramanam Shashti Bhakti. Ramanam Shashti Bhakti Bahuvachana will not be Ramanam because R is already there. But Khat Dhatu will be, or for example Jata will be Jata Nam only, not Nam. Jata Nam. दूसरा, चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे. चुर चोरयति, चिंत चिंतयति, कथ कथयति, भक्ष भक्षयति, रच रचयति. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. संस्कृत में क्रिया के 10 प्रकार के रूप बनते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो दिस पॉइंट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. तृतीय पॉइंट इन पेज नंबर चतुर्दशे पृष्ठक्रमांक चतुर्दश पृष्ठक्रमांके तृतीय किमस्ति. संस्कृत में क्रिया के 10 प्रकार के रूप बनते हैं. इन्हें लकार कहते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी सीन लट लकार एंड लोट लकार. टुडे वी आर सीन लंग लकार. In this book there are 2 more lakars, Vidhiling lakar and Lit lakar.
This we saw at the beginning of today's session. In Sanskrit, there are 5 more. Lrit, Lring, Lit, all these lakaras will come, but they are not in this book, they will come in the next book. So we will just see these lakaras, see Sandhi, and maybe we can see next book after that, if we are all capable. Samartha. Further, page number 14 only. Bhudatu, Lang lakare, Bhutakale, Lang lakare, Bhudatu will become Abhavat, Abhavatam, Abhavan, Abhavaha, Abhavatam, Abhavata, Abhavam, Abhavava, Abhavama. So when you have time, you have to see Rama Shabda and Bhudatu. In our sessions, starting maybe from next week or the week after, every day there will be something to see at home. So if you have any questions, we can discuss that. Otherwise, we will go little quickly in our sessions. So starting from next week, for example, or the week after, we will quickly go a bit faster. Bhudatu, you have to see at home, like Rama Shabda, Abhavat, Abhavatam, Abhavan, Abhavaha, Abhavatam, Abhavata, Abhavam, Abhavava, Abhavama. Suchana, this Suchana is also important for us in Bhutakala. What is this? Dhatu se pehle a lagega. So, bhavati dhatu, bhu dhatu will become abhavat, pat dhatu apathat, lik dhatu alikhat, vad dhatu avadat. In Bhutakala a लगेगा धातु से पहले, अंत में संक्षिप्त रूप, जैसे अपठत, अगच्छत आदि. धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले आ लगेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द शब्द इज आगच्छत और आगच्छ, इट विल बिकम आगच्छतः, नॉट अगच्छतः. गच्छतः इज टू गो, टू कम. Agachatah, not agachatah, because agachatah will also be for gach, gam dhatu. So agam dhatu will become agachatah. So if there is akshar, praswar hoga, a, I, u, then purve, dhatu purve, a, dirgha asti. Niyama trayodasha. गमन, चलना, हिलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया होती है, जैसे ग्रामम गच्छति, गृहम गच्छति. सो फॉर सेम वे ग्रामम अगच्छत, गृहम अगच्छत, एटसेट्रा. ग्रामम द्वितीया विभक्ति, गृहम द्वितीया विभक्ति. एनी क्वेश्चंस बिफोर वी गो? आपने क्या बताया? अगच्छत और आगच्छत. हाँ जी. तो अगच्छत इज फॉर गम धातु, क्योंकि गम धातु भूतकाल में अ धातु पूर्वे अ अस्ति. तो गम विल बिकम, गम होता है अगच्छत. बट इफ इट इज ऑलरेडी आगच्छत, लाइक सह आगच्छति, अहम आगच्छामि, कमिंग, आने का, देन इट बिकम्स आ. अगच्छत नहीं होता है, आगच्छत, आगच्छतः होगा. And agachat means jana. हाँ, agachat जाना, जाना इन पास्ट टेंस, agachat आना इन पास्ट टेंस. तो वो गया, पहले उदाहरण में यही आएगा, वह गाँव गया. सो सहा अगच्छत, वह गाँव से आया, सह ग्रामात आगच्छत. सो पेज नंबर 15, अभ्यास सप्तम. उदाहरण वाक्य, उसने पुस्तक पढ़ी, स पुस्तकम अपठत. ये तो हमने वी सॉ इन अर्लियर अभ्यास. इफ देयर इज कॉन्सोनेंट, अगर स्वर नहीं है बट इट विल बी व्यंजन, व्यंजन शब्द, पेज नंबर 6, कॉन्सोनेंट. सहा पुस्तकम होता है सपुस्तकम, इट विल बिकम सपुस्तकम. दैट विसर्ग लोपः भवति. व्यंजनात् पूर्वे, व्यंजनात् पूर्वे सः इति शब्दे विसर्ग लोपः भवति, स भवति. सः विल बिकम स. सः पुस्तकं पठति, स ग्रामं गच्छति,
स ध्यानं करोति, whatever, किमपि। उसने पुस्तकं पढ़ी, स पुस्तकम् अपठत्। तू गाँव गया, त्वं ग्रामम् अगच्छः, not आगच्छः। त्वं ग्रामात् आगच्छः, तुम गांव से आया। लेकिन यहाँ पे तुम गांव गया, विल बिकम त्वं ग्रामम् अगच्छः। मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम अखादम। दुर्जन पुस्तकम अचोरयत, ये होगा श्री प्रकाश जी भवानेव वदतु। दुर्जनः पुस्तकम अचोरयत किमस्ति हिंदी भाषायां? दुर्जन ने पुस्तक चुराई। हाँ, सही, सो इजी। दुर्जन ने पुस्तक चुराई। सः अचिन्तयत्, भवानेव सूर्य प्रकाश जी, सः अचिन्तयत्, वह अचिंतित, उसने सोचा, वह सोचा, बस। उसने सोचा, हाँ, उसने सोचा। सः अचिन्तयत्, उसने सोचा। अहम अकथयम्, मैं कहा, मैं बताया, मैंने कहा, हाँ। कन्यामालाम् अरचयत्, कन्या, हाँ, लड़की माला बनाई। लड़की ने माला बनाई, करेक्ट, लड़की ने माला बनाई। तो वैसे ही चलेगा। प्रज्ञा नृपमानमत भार्या सुदामा पिबत वसुधायां गंगा यमुना च स्तः स आगच्छत। देखिए, स आगच्छत होगा, वो आया, उसने, हाँ, आया। और ये वसुधा इति पृथ्वी, वसुधायां गंगा यमुना च स्तः। किमर्थं स्तः? हाँ, सूर्य प्रकाश जी, किमर्थं स्तः? अस्ति, स्तः, सन्ति, है ना? लट लकार में इट विल बी अस्ति, स्तः, सन्ति। सो गंगा यमुना द्विवचने स्तः। Today it is enough until here, because we have some new people trying to catch up. So tomorrow we see the entire page number 15, Abhyasa 7. If possible, already see the Abhyasa at home, and we won't see every line. We will see only few lines. So if you have some questions, we will discuss that tomorrow. But please go through the Abhyasa yourself and see you tomorrow. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashyavitau Vande Bhagavantau Punah Punah. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।